মুছলমানক লৈ বৃহৎ মন্তব্য আগবঢ়াইছে স্পষ্টকৈ কৈছে অসমত 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে তাৰ বিপৰীতে 30% বাংলাদেশী মুছলমান আছে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনপটীয়াকৈ কৈছে যে 30% বাংলাদেশী মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে অৰ্থাৎ মিয়া মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে তেওঁলোকৰ মাজত গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে মিয়া মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে আমি খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা দিম আৰু এনেকৈ পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য কৰিছে মিয়া মুছলমানক লৈ বংগৰ ভূমিত উপস্থিত হৈ মিয়া মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছে মিয়া মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা দিয়াই হৈছে বিজেপিৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে লৈ আহিছো সবিশেষ জনাই আছো টাইমেড বিগ ব্ৰেকিং ডাঙৰ খবৰ মিয়া মুছলমানৰ ভোট নালাগে বিজেপিক মিয়া মুছলমানৰ ভোট নালাগে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাই আমাৰ লক্ষ্য বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাই হৈছে বিজেপিৰ লক্ষ্য অসমত 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমান আছে অসমত জনসংখ্যাৰ হাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমান তাৰ বিপৰীতে 30% হৈছে বাংলাদেশী মুছলমান আৰু এই সকলৰ ওচৰলৈ গৈ মই তেওঁলোকক কওঁ যে তোমালোকৰ ভোট নালাগে আৰু এনেকৈ 2014 চনৰ পৰা বিজেপিয়ে জিকি আহিছে অসমৰ মুছলমান আৰু সনাতন এক হৈ বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এনেকৈ বংগৰ ভূমিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৰ্জন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়া মুছলমানক লক্ষ্য কৰি কেইবাটাও মন্তব্য আগবঢ়াইছে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে মিয়া মুছলমানৰ ভোট বিজেপিক নালাগে মিয়া মুছলমান অবিহনে বিজেপিয়ে জয় হৈ আহিছে 14 চনৰ পৰা বিজেপিয়ে এনেকৈ জয়ী হৈ আহিছে অসমৰ মুছলমান আৰু সনাতনীয়ে এক হৈ বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 30% বাংলাদেশী মুছলমান অসমত বৰ্তমান সময়তো আছে আৰু এওঁলোকৰ ৰাজহাৰ আমি ভাঙিব লাগিব এওঁলোকৰ ৰাজহাৰ ভাঙি আমি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ মুছলমান আৰু সনাতনী এক হৈছে এক হৈ বিজেপিক জয়ী কৰোৱাই বাংলাদেশী মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে একেলগে সংগ্ৰাম কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰ অসমৰ জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু নিৰ্বাচনী সমীকৰণক লৈ পুনৰ এবাৰ অত্যন্ত কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পশ্চিম বংগৰ জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যিসকল লোক বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ বাবে ভাবুকি হৈছে তেনে 30% লোকৰ ভোটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বিজেপি সেইসকল লোকৰ ভোটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু তেওঁলোকৰ ভোট নোলোৱাকৈ বিজেপিয়ে জয় লাভ কৰি আহিছে ভোটৰ স্পষ্ট অংক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাই দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত 2014 চনৰ পৰা বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক জয়ৰ ৰহস্যও কৈছে তেওঁ কৈছে মই বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ ওচৰলৈ গৈ কওঁ যে মোক তোমালোকৰ ভোট নালাগে তোমালোকে আমাক ভোট নিদিবা 2014 চনৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ ভোট নোহোৱাকৈ জিকি আহিছো আমি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বিশ্বাস নকৰোঁ বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সুৰক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যটো পুনৰ সোঁৱৰাই দিছে আৰু কৈছে ৰাজ্যখনত থকা প্ৰায় 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোক এই মাটিৰেই সন্তান তেওঁ কৈছে গৰিয়া মৰিয়া দেখি আদি যিসকল আছে তেওঁলোক প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া যিসকল প্ৰব্ৰজনৰ জৰিয়তে আহিছে 30% তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা হৈছে আৰু তেওঁলোকে অসমত আহি অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব সনাতন আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অভিন্ন যুঁজ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ সনাতন ধৰ্মী হিন্দু আৰু 35% খিলঞ্জীয়া মুছলমান এক হৈছে এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে এতিয়া 30% বাংলাদেশী মুছলমানৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছে আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানে বুজি উঠিছে যে তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব সমাজ সনাতনী সমাজৰ সৈতেহে সুৰক্ষিত আমি একেলগে বহিৰাগত শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আছো আৰু যুঁজ দি যাম যিসকলে আমাৰ সমাজখনক গ্ৰাস কৰিব খুজিছে তেওঁলোকৰ ভোটৰ মূল্য আমাৰ ওচৰত শূন্য
তেওঁলোকৰ ভোটৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। আৰু এনেকৈ মিয়া মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পশ্চিমবংগৰ ভূমিত পুনৰ এবাৰ মিয়া মুছলমানক লক্ষ্য কৰি কেতবোৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কৈছে, আমি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰোঁ। আমি পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ মিয়া মুছলমানৰ ভোট আমাক নালাগে। আমাৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है। इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30%
बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान का कमर हम लोग तोड़ दिया हो। आपको आश्चर्य होगा, असम में 35% मुसलमान हैं, 30% बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। मैं उनका बीच में जाके बोलता हूं, मुझे तुम्हारा वोट का कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा वोट से जीतूंगा। और ऐसे ही 2014 से बीजेपी जीत रहा है, इसलिए हमारे असम की मुसलमान और सनातन हम लोग एक है। बांग्लादेशी मुसलमान